Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about nutrition in microbes, yeah, nutrition in bacteria. Especially we will talk about nutrition in bacteria. Nutrition को पहले हम define करेंगे. What does nutrition means? Nutrition means the food with which we concern to take it from outside and to deliver an energy. So nutrition is the study concerned with the food and energy. अगर हम न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहते हैं प्रॉपरली वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन लाइक it is a chemical process or biochemical process by which we can obtain a chemical substances from outer environment, from external environment, and used it for cellular activities by an organism. So that process is called nutrition. न्यूट्रिशन में जिस तरह हमारे बॉडी में हम न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं बाहर से लेना, उन न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिशन। और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो सेम लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द एसेंशियल न्यूट्रिशन. It is that type of nutrition which are required in the body from outside. We have to take that nutrition from outside. Body cannot synthesize it in adequate amount. So it can be divided into two types. One is macronutrients and another one is micronutrients. Macronutrients are those nutrients which are required in larger amounts. For example, in elemental form, if we talk about carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc., are the macromolecule which are essential to take from outside is glucose, carbohydrate, and lipids. And the micronutrients are those nutrients which are required to take from outside. Our essential micronutrients are mainly zinc, manganese, cobalt, nickel, etc. So if we divide the microbes or classify the microbes on the basis of nutritional requirement, we can divide these microbes or classify the microbes into different classes on the basis of sources. On the basis of carbon sources, we can divide these microbes. From where does this microbe will take its carbon? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स के कौन सा एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन को, फूड को तैयार करने के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्स. तो ये तीन सोर्सेस को हम बेस बना के हम माइक्रोब्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो हमारे पास जो फर्स्ट वन है that is the classification of microbes based on carbon sources. In case of carbon sources, we can divide microbes into two classes. One is autotroph and another one is heterotroph. As its name indicates, auto means self and troph means food. It is those microorganisms which can synthesize its own food by its own self. मीन्स के ये हमारे पास इसका जो कार्बन होता है, ये कार्बन लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके लिए जो कार्बन सोर्स बनता है या कार्बन ये जहाँ से ले रहे होते हैं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए जो इसको कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है वो इनऑर्गेनिक कार्बन से लेते हैं, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से. और इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह के हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करके हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं. दीज ऑटोट्रॉफ आर जस्ट लाइक अ प्लांट्स. They can take carbon from carbon dioxide by using water molecule. They can synthesize this glucose along with some form of energy will delivered over here. So हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन का जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन लेते हैं in order to synthesize its own organic molecule glucose.
And based on this carbon sources, these microbes is also divided to another one group, that is heterotroph. As its name indicate, hetero means different and troph means food, which will take the carbon or it will uses that one carbon from organic sources, that just like a human body, a human being uses most of the organic molecule for its food or as in a nutrients. We are taking carbohydrate, protein and lipids. सो हमारे पास जो एनर्जी बेस्ड क्लासिफिकेशन है या एनर्जी सोर्सेज के बेस्ड पे जो माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया गया है, वो भी दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. वन है फोटोट्रॉफ एंड अदर वन इज कीमोट्रॉफ. फोटोट्रॉफ मीन्स जो फूड के सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी का सोर्स यूज होता है वो लाइट होता है, सो उनको हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ. और जब हमारे पास एनर्जी सोर्स कोई केमिकल हो, जैसे अमोनियम आयन या नाइट्रेट हो गया या कोई भी केमिकल अगर फूड के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को हम क्लासिफाई करते हैं अंडर द क्लास ऑफ कीमोट्रॉफ. सो एनर्जी सोर्स के बेस्ड पे भी इसके टू क्लासेस हैं. वन इज फोटो, इज इट्स नेम इंडिकेट, इट विल डिपेंड अपॉन द लाइट for its food synthesis, just like a plant. Phototroph is also just like a plant. The plant also uses a sunlight for its food synthesis, for its glucose synthesis. This one reaction will occur in the presence of sunlight or photo. That's why we can call a plant as photoautotroph. And the third one class of microorganism is electronic source. The electron which is coming for this chemical reaction to occur to synthesize those nutrients, the electron will come from either inorganic source or organic source. The inorganic source is lithotroph, and organic source is, as its name indicate, from organic substances. So हमारे पास इन्हीं तीन क्राइटेरिया को बेस बना के, इन्हीं तीन सोर्सेस को बेस बना के हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को. बैक्टीरियल को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम इसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन यही तीन क्राइटेरिया लेंगे और फिर जाके हमारे पास ये 5 क्लासेस बनेंगी. तो डिस्पाइट द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन माइक्रोब्स, most may be placed in one of these 5 classes based on these 3 sources or criteria, or on the basis of these 3 main sources. We can classify bacteria into 5 classes. चूँकि माइक्रोब्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म के लिए या फूड सिंथेसाइज करने के लिए, तो इसको अलग अलग भी, ये जिस तरह हमने ये डिवाइड किया है, सिंपली भी हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं. और अगर हम इन्हीं 3 क्राइटेरिया को बेस बना के इनके ये 5 क्लासेस हम आगे नॉमिनेट कर सकते हैं, या हम जब इसके बड़े बड़े नाम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नाम देखते हैं, तो हम डर जाते हैं या वेयर्ड लगते हैं, भले डरावनी लगते हैं. लेकिन अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से हम जोड़ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. तो हमारे पास इन्हीं 3 क्राइटेरिया को बेस बना के जो फर्स्ट क्लास ऑफ बैक्टीरिया बन रही हैं, दैट इज फोटोलिथोट्रॉफी. फोटो मीन्स लाइट, द एनर्जी सोर्स. जितने भी नाम हैं इन 5 क्लासेस के, वो 3 वी कैन से के 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है. मीन्स फर्स्ट पार्ट जो है इस क्लास का, वो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी सोर्स, यानी कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है. एनर्जी सोर्स के बेस्ड पे पहला नाम दिया गया है. जो दूसरा टर्म है इसी क्लास में, जो दूसरा नाम है या मिडल अल्फ़ाबेट है या मिडल नेम है, वो हमारे पास है लिथो. लिथो मीन्स कि ये हमें इंडिकेटर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सोर्स से आ रहा है. सो इलेक्ट्रॉन अगर इनऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है तो इसको हम कहेंगे लिथो. और ट्रॉफी मीन्स कि ये हमारे पास ट्रॉफी मीन्स फूड, यानी कि ये फोटो लिथोट्रॉफी, लिथो हेटेरोट्रॉफी है. फोटोलिथोहेटेरोट्रॉफी मीन्स कि हेटेरोट्रॉफी है तो ये खुद अपना जो उसका कार्बन का सोर्स है वो
कहाँ से आ रहा है? हेटेरोट्रॉफिक है तो कार्बन सोर्स इज ऑर्गेनिक। सो कार्बन सोर्स क्या है इसकी, वो हमें बताते हैं। जब हेटेरोट्रॉफिक है तो ये ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है। ये जो कार्बन ले रहे हैं अपने फूड के सिंथेसिस, न्यूट्रिशन की सिंथेसिस के लिए, वो ऑर्गेनिक सोर्स से ले रहे हैं। और जो हमारे पास लिथो है, लिथो नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मिडल वन नेम इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, last one carbon source, middle one will show about the electronic source, and the first one will show about the energy source. So इसके प्रोनाउंसिएशन अलॉन्ग विद उसका उसकी जो हमारे पास डेफिनेशन हो जाती हैं इस क्लास ऑफ बैक्टीरिया की, वो बड़ी आसान हो जाती है। ये तो नॉमनक्लेचर हो गई। ये नॉमनक्लेचर तो नहीं है, हमने डिफरेंट क्लासेस बना लिए हैं, लेकिन फिर भी जो इसके नेम को हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 3 हिस्सों में, तो पहला जो हिस्सा है, वो पहला पार्ट जो है इस नेम का, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। If the energy is coming from light, so we will the name over here will be photo, और अगर ये किसी केमिकल से आ रही हैं तो नेम विल बी कीमो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक सोर्स किसी इनऑर्गेनिक सोर्स से है तो लिथो का नाम आएगा, और अगर ये ऑर्गेनिक सोर्स हो तो ऑर्गेनो का नाम आएगा। हेटेरोट्रॉफी तब यूज होगा जब हमारे पास कार्बन सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स हो, कार्बन हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक सोर्स से, ऑटोट्रॉफी उसके नेम में आएगा जिसके लिए कार्बन सोर्स जो हो वो इनऑर्गेनिक हो। सो ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करके अपना फूड और न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड फोटोलिथो हेटेरोट्रॉफी। सो इसके एग्जांपल हमारे पास है सियानो बैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ बैक्टीरिया. The second one class is photoorganoheterotrophy. As its name indicates, the energy source is again light, here organo. So the carbon source, yeah, electronic source is organic in nature. Electron is coming from organic compound, and heterotrophy means that the carbon is again coming from organic source. So the example of photoorganoheterotrophy is green non-sulfur bacteria and purple non-sulfur, mostly non-sulfur bacteria is the example of photoorganoheterotrophy. And the third class is chemolithoautotrophy. Chemolithoautotrophy, the energy source is from chemical reaction will occur over there, reduction oxidation reduction reaction occur, and will give either it will give an electron or will take it, but mostly the chemical compound will gives its the energy will come from those oxidation reduction reaction. And the carbon source will be inorganic in autotrophy. Litho means कि हमारे पास electronic source is in inorganic, and autotrophy means कि हमारे पास इसके carbon source is inorganic. The carbon is coming from inorganic source, electron is coming from inorganic source, and the energy source used over here is the chemical. Chemical will give its energy to this chemical for the metabolization or synthesis of nutrition by those microbes. And the microbes included methanogen and hydrogen oxidizing bacteria. Hydrogen oxidizing bacteria. And chemolithoheterotrophy, as its name again indicates, that the first term is chemo, energy is coming from chemicals, and litho, inorganic source of electron is used over here. And हमारे पास जो लास्ट वन है हेटेरोट्रॉफी, कि जिसमें हमारे पास कार्बन सोर्स कार्बन कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है. सो द सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड बिग्योटा इज द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ this chemolithoheterotrophy. And the last one class is chemoorganoheterotrophy, which is mostly concerned with non-photosynthetic bacteria, which will it is the type of bacteria which will not use its photosynthesis for its food synthesis, for its nutrition synthesis. So all the type of microbes are bacteria which synthesizes their food by non-photosynthetic pathway. So
That type of bacteria or microbes is included over here. The chemical or chemo name indicates that the chemical reaction or redox reaction or chemical are involved in the is an energy source for the production of food of that microbes in organo. So हमारे पास जो electronic source है वो organic है, and heterotrophy means the carbon is also coming from organic source. So the fifth one class is the last one, which included mostly non-photosynthetic microbes. We'll see you in my next one lecture, inshallah.